नेक्स्ट देखियो हमरो फंडामेंटल राइट्स। ओके, फंडामेंटल राइट्स वो पार्ट रे अछि, पार्ट 3 of the Indian Constitution. Okay, part 3 of the Indian Constitution. तापर फंडामेंटल राइट हमरो केते टाइप रो अछि, पांच टाइप रो अछि। फर्स्ट हला राइट टू इक्वालिटी। ओके, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी कहते आर्टिकल 14 रु आर्टिकल 18। तापर राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम हला आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22। यादरे कौन कौन अच्छी आगू देखिए डिटेल कर पूरा। तापर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 रु आर्टिकल 23 एंड 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हला आर्टिकल 25 रु आर्टिकल 28। आउ कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, राइट हला 29 रु 30। ओके, एटा मन रखिया पई गोटे आ गोटे हला आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। गोटे हाथ चित्र करवा है, एटा आंगुठी परे हाथ चिन्ह। ओके, एटा कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। आम यही आंगुठी कौन करूँ, टीप चिन्ह दो। तो आमको जो राइट मिल आम एजुकेशन नहीं पार, तो टीप चिन्ह रु एजुकेशन मन रखिपर है। तापर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये आंगुठी कौन करा हुए तो माने पूजा पूजा जो करा हुए ये आंगुठी आमर रिलीजन काम करा हुए। ये टीप चिन्ह माने टिप जो कौन ठाकुर को सिंदूर फिंदूर कि एगुड़ा सब दिखती। ओके, तो से मन रखा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तापर एटा मझी आंगुठी, मझी आंगुठी है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आमको फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मिलची, तो आम जी आमको एक्सप्लॉयट कर वी कैन शो द मिडिल फिंगर। ओके, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ये कौन माने ये आंगुठी कौन करा हुए बाघर है रिंग पिंधा हुए। ओके, तो बाहला मोस्टली कहते बाहला फ्रीडम पड़े जाए कहती है कहूनी राइट टू फ्रीडम। तो ये मन रखा फ्रीडम। तापर राइट टू इक्वालिटी, यहाँ कौन सब छोट आंगुठी किंतु सी कौन कह मु भी 5 आंगुठी सहित सामान मत भी इक्वाल राइट दियो। तो राइट टू इक्वालिटी तो मन रखिपर ये सब छोट आंगुठी कौन कह इक्वाल मु। यहाँ कौन हुए रिंग फिंगर आमर रिंग पिंधा हुए तो फ्रीडम। तापर यहाँ मझी आंगुठी एक्सप्लॉयटेशन। तापर यहाँ रिलीजन ये टीपा फीपा दि जाए और यहाँ एजुकेशन आ सब जो मुठा है राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो मन रखिया कि नेक्स्ट जीवा आगू को
एटा देखले आमे एटा हमर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अछि जोटा को माग्मा कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जाए। माग्मा कार्टा कौन माने सेंटर पार्ट also called as cornerstone of the constitution। एगुड़ा यही वर्ड रे हमर पचरा जाए क्वेश्चन dash is known as the magma carta of the constitution dash is known as the cornerstone of the constitution दिया जाए तो फंडामेंटल राइट फंडामेंटल ड्यूटीज डीपीएसपी तापर हमर प्रिएम्बल एगुड़ा सब दिया जाए तो ता भीतर चूज करियार अछि। ओके अब फंडामेंटल राइट प्लस डीपीएसपी को कौन कहा जाए द कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कौन प्रमोट करे प्रमोट द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी operate as limitation to the tyranny of the executive and arbitrary law of the legislature माने टायरेनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव माने एग्जीक्यूटिव नहले एगुडा नथिले जहाँ भी चाहिए कर परिबो आर्बिट्रेरी लॉ ऑफ लेजिस्लेचर लेजिस्लेचर भी तार आर्बिट्रेरी लॉ बाहर कर परिबो तो सही सब जिन को प्रोटेक्ट करने पे हमको फंडामेंटल राइट्स दिया है। तापर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 remove the right to property from fundamental right and placed it under legal right। एबे को आर्टिकल सेटा आर्टिकल 300A पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एटा थरे यूपीएससी रे भी पचारतला क्वेश्चन टा हला तापरे आगु देखिबा को राइट गुरा हमरो एलियन मानन को दिया जाए एलियन माने किए बाहर ग्रह आसीथिबा लोक एटी बाहर ग्रह नुहे एटी हमर अलग देश रु आसीथिबा लोक। ओके राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन अंडर ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ जदि एगुड़ा सब रही डिस्क्रिमिनेशन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन ताहरे बाहर लोक भी आसी कहबे आमे तो इक्वल आमको इक्वल राइट दिया जाऊ आम देश और तांको देश भीतर फरक कौन रहिबो सबू बांग्लादेशी कि म्यांमारी सब आसिक कहबे ना आम इंडिया रहबू एठी सेफ प्लेस तो किसी गोटे डिस्क्रिमिनेशन रखाई जे तुम सबू जिनस इक्वल हो पार ना किंतु किसी गुड़ा तांको भी राइट दिखाई जे तुमको किए मारी पारे कि अलग एक्सप्लोटेशन करें से भाया सब जिन दिखाई किंतु सब तो दिखाई पार भी ताले राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यदि नेपाल लोक आसिक कहे आमको भी एम्प्लॉयमेंट दि जाऊ आम परीक्षा कंपटीशन करेंगे आम जा कि जगह तो एम्प्लॉयमेंट ही नथिबो तो सेटपाई ए राइट भी दि जाए राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट तापर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तुम जहाँ चाहो इंडिया आसिक कही पारनी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट तापर राइट टू भोट इन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली तापर राइट टू कंटेस्ट फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर एटा माने सेया जहाँ एटा जहाँ सेया सेया भोट कर परिबेनी और मेंबर भी हो परिबेनी जेमती टू होल्ड सर्टन पब्लिक ऑफिसेस लाइक प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट etc। ओके फॉर प्रेसिडेंट इन इंडिया बोथ सिटीजन बाय बर्थ एंड नेशनलाइजेशन इस बाय बर्थ सिटीजन हिथबो कि बाय नेशनलाइजेशन सिटीजन हिथबो सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हे परिबो किंतु इन यूएस इन यूएस बाय बर्थ हवा दरकार तार ओके एमती अलग अलग देश भी अलग अलग जिनस रही थे।
तापर देखिए फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर डिफेंडेड एंड गार्डेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। वो आर्टिकल द्वारा आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। आमर जदि फंडामेंटल राइट्स हनन है आम सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली जापर। ओके तापर आउ हाई कोर्ट को आर्टिकल आर्टिकल 226। ओके फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड माने सबु बेले एटा लागू हबो बोली माने नहीं केतोल कर्टेल भी करा जाय परियो। स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल और नॉट कोर्ट विल डिसाइड। कोर्ट किए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तापर मोस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल अगेंस्ट द एक्शन ऑफ स्टेट if violated by private individual as ordinary legal remedy। हमें देखिए को फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल राइट दीटा माने स्टेट पाई भी आउ प्राइवेट इंडिविजुअल पाई आउ को फंडामेंटल राइट प्राय तो स्टेट पाई। ओके तापर जस्टिसेबल इन नेचर माने जदि तुमर कानून होची कोर्ट को जाय परिया एनफोर्स कोर्ट कैन एनफोर्स इफ वायलेटेड। फंडामेंटल राइट्स नॉट परमानेंट पार्लियामेंट कैन अमेंड इट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड एटा हला इंपोर्टेंट प्रोवाइडेड इट डज नॉट अफेक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमरो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कोड आस्तला मन रखिया केशवानंद भारती केस। ओके केशवानंद भारती किए ये जड़े एलोर मठर विषय डिटेल देखिए। ओके अलग आउ गोटे क्लास करके पूरा डिटेलटा देखिए कौन होता है केशवानंद भारती केस रे। ओके कहीं एटा बहुत इंपोर्टेंट। फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। ओके को फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो पारियो सबू सस्पेंड हो पारियो एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। अच्छा आर्टिकल 19 भी हो पारियो। ओके आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी वार और एक्सटर्नल एग्रेशन बट नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन। आगुरु आर्म्ड रिबेलियन जगह कौन थिला इंटरनल इमरजेंसी। अच्छा आमर फंडामेंटल राइट आर्टिकल कोड को जाके आर्टिकल 12 रु 5 जाके। ओके तो आमर आर्टिकल 12 आरंभ करियो। आर्टिकल 12 डिफाइंस द स्टेट फ्रॉम पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माने फंडामेंटल राइट्स पाई एटा मोस्टली स्टेट ऊपर ये करे है चाहे स्टेट एक्शन ऊपर एटा जिनसटा तो स्टेट बोली किए किए एठी हे परियो हला ताको डिफाइन करा है एठी स्टेट किए हमर जेमती यूनियन एंड स्टेट डिफाइन करा हैतला आर्टिकल 1 रे हला आर्टिकल 1 रे एठी डिफाइन कराला स्टेट हला किए। Action of this agency can be challenged in the court as violating the fundamental rights. Okay. Article 13 the law inconsistent with fundamental rights shall be void। एटा की कर परिबो एटा जुडिशियरी पे। ओके द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू करियो जे गोटे लॉ जो कराला सेटा फंडामेंटल राइट को भायोलेट करूनी तो जदि करूची ताकू नल एंड भॉइड एमाने करि परिबे।
सुप्रीम कोर्ट पाखे आर्टिकल 32 रे अच्छी आउ हाईकोर्ट पाखे आर्टिकल 226 रे अच्छी आगुरी कही केशवानंद भारती केस रे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आसला the constitutional amendment can be challenged in supreme court if it violates the fundamental rights ହେଲା जोटा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जब को जदी वायोलेट करछि ताहले एटा को चैलेंज करा ही परिबो ओके आर्टिकल 12 और 13 वाला आर्टिकल हमर फर्स्ट फंडामेंटल राइट हमर कोन करथले एटा करथले ये कौन कौन मु समस्त सहित इक्वाल तो राइट टू इक्वालिटी इक्वालिटी हमर कौन दीटा जिनस इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ओके दीटा जिनस दिया होछि अब प्रोहिबिट कौन करा होछि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन रेस कास्ट जेंडर आउ प्लेस ऑफ बर्थ आउ कौन करूची जे टाइटल टाइटल को ये करा होची प्रोहिबिट करा होची आउ अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट करा होची गोटे गोटे करी देखि दबा तो आर्टिकल 14 States shall not deny any person equality before law and equal protection of law within India. To achieve equality of status and opportunity equality before law how equal protection of law तार कौन कौन दीटा माने एटा हला equality before law हला नेगेटिव कनोटेशन टा no one is above law of the land law does not discriminate on the basis of birth position gender or other personal attributes तो यही सब ये रे लॉ कहा को डिस्क्रिमिनेट कर परिबा नहीं हाउ कॉन्सेप्ट अडॉप्टेड फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउ एटा हला इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हला पॉजिटिव कनोटेशन लॉ प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल दोज हु आर इन सिमिलर सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशन एटा हला कॉन्सेप्ट अडॉप्टेड फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ओके दिटा को मन रखिया इंपोर्टेंट पॉइंट किंतु एठी आइला हमरो किछि एक्सेप्शन आर्टिकल 14 रो आर्टिकल 361 प्रेसिडेंट गवर्नर एंजॉय सर्टेन इम्यूनिटीज लाइक नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग नो अरेस्ट नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर ऑफिशियल वर्क एगुड़ा तंकु इम्यूनिटी दिया है Article 361A no person shall go through a civil or criminal proceeding with respect to a true report published in newspaper related to any proceeding of parliament यदि पार्लियामेंट रो गोटे प्रोसीडिंग को न्यूज़पेपर रे पब्लिश करा हला तो ताकू किछि सिविल की क्रिमिनल प्रोसीडिंग रे जिबा को पड़िबो नाही किंतु जदि फॉल्स रिपोर्ट देला ताले हेई पारे तापर आर्टिकल 105 saves MP from court for any vote given in parliament गोटे लॉ माने बिल कि गोटे ये ऊपर जदि को एमपी किछि वोट देले तो ताकू आंसरेबल होबा पड़िबो नाही सेठी तापर आर्टिकल 31C रिलेट्स टू डीपीएसपी इम्प्लीमेंटेशन डीपीएसपी इम्प्लीमेंटेशन रे बळे भी किछिटा जदि डिस्क्रिमिनेशन हबो तो सेटा भी आर्टिकल 14 नो एक्सेप्शन तापर आर्टिकल 15
State shall not discriminate any citizen on ground of religion, race, caste, sex or place of birth. State এই বিষୟରେ ତା ସହିତ discrimination କରିପାରିବ ନାହିଁ. Discrimination on other ground like qualification, intelligence is not prohibited. এই হিସାବରେ ତାହେଲେ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି. କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଯଦି ଜଣେ କରିଥିବ +2 କି ଆମର +2 କି ଆମର +3 କି ଆମର पोस्ट ग्रेजुएट से हिसाब रे पोस्ट गुड़ा अच्छी वैकेंसी अच्छी फिलअप करने इंटेलिजेंस परीक्षा हम एग्जाम हम इंटेलिजेंस चेक करने डिफरेंट ट्रीटमेंट डज नॉट मीन डिस्क्रिमिनेशन. आर्टिकल 15 part 2 no person shall be subjected to any disability, liability, restriction or condition for access to shop, public restaurant, hotels, etc. Eta discrimination prevents discrimination both by the state or private individual. and कार disability अच्छी कि कार liability अच्छी तो ताको public amenities यूज करिया पई किछि restriction लगा ही परिबो नाही. गोटे रिसेंट केस मन थिबो दिल्ली रे गोटे होटल फाइन डाइन होटल थिला सेठी जणे स्त्री लोक साड़ी पिंथि की गले हला तो तांकू होटल वाला मना कले नहीं आपन को आमे एंट्री देई परिबो नाही. पचारला बेल को कहीं दे परिबे नाही आपन को अटायर आम सहित मोर फाइन डाइन होटल सहित माने अटायर रे मैच करबनी तो वी कैन नॉट गिव यू एंट्री. तो से महिला जनक जाई कि पुलिस कंप्लेन कले होटलटा बंद हवा सहित सोशल मीडिया रे भी बहुत अपोजिशन हला बहुत निंदा करा गला तार. ओके आर्टिकल 15(3) gives power to state to make exemption give exception and special provision for women and children. तो एटा हमरो डिस्क्रिमिनेशन नुए एटा हला हमरो पॉजिटिव ये तो तांकर अपलिफ्टमेंट पई किछि एक्सेप्शन और स्पेशल प्रोविजन कर हे परिबो तार वुमेन और चिल्ड्रन मानन पर. ओके तापर आर्टिकल 15(4) स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर socially and educationally backward citizen for their advancement. Okay next hela 15(5) it mention provision of reservation. It mention provision for reservation SC ST OBCs concerning admission to educational institution both private and government aided. इटा केबे हितला 93rd Constitutional Amendment Act. Okay 93rd Constitutional Amendment Act 2005. बहुत इम्पोर्टेंट. ओके मन रखिया को चेष्टा करंतु. To give effect to this provision, the center enacted Central Educational Institute Reservation in Admission Act 2006 sorry 27% quota for OBC in all central higher education institution. तापरे नेक्स्ट क्लास देखिए आर्टिकल 16 और 17 एटा हला एजुकेशन पाई 15 रे दिया है 16 रे कोन पाई दिया है 16 रे एम्प्लॉयमेंट पाई दिया है एम्प्लॉयमेंट पाई. ओके थैंक यू.